Next we will discuss the reaction with acids. Metal reacts with acids to form metallic salts along with the release of a gas, that is hydrogen gas. And hydrogen gas burns with a pop-up cell. Non-metals do not react with acids. The reaction of metal with acids is based on reactivity series. कालू नाम का माली आलू जरा फीके नीले से पकाता है. That is the short form, the first alphabet switching. Then copper, mercury, silver, gold, and platinum. This is the reactivity series we have discussed previously, bache. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, nickel, tin, lead, and then hydrogen. Acids contain hydrogen atom. For example, HCl, hydrochloric acid. H2SO4, sulfuric acid. It is also known as hydrogen sulfate. H2CO3, carbonic acid. So these are the acids, bache. They all contain hydrogen ions, hydrogen atom. We'll take a metal, bache. For example, sodium, potassium, magnesium. If we go for the formation of salts, bache, when sodium reacts with acid, it will form a salt. How? Sodium is more reactive than hydrogen. Sodium comes above in the reactivity series. So sodium is more reactive than hydrogen. And the reactions in which a more reactive element or metal displaces the less reactive one is known as displacement reaction. बच्चे हमेशा क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देता है. तो सोडियम बच्चे ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, यह हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा देगा. क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड. इट इज द सॉल्ट बेटा, टेबल सॉल्ट. देखो बच्चे, पहले हाइड्रोजन क्लोराइड था, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था. अब सोडियम उससे रिएक्ट रहा है और सोडियम उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस, एंड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट, पोटेशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. पोटेशियम ऑल्सो कम्स अबव हाइड्रोजन. बेटा पोटेशियम यहां पर है और हाइड्रोजन ये रहा. So potassium is more reactive than hydrogen. So potassium will displace hydrogen. Potassium hydrogen को अपनी जगह से हटा देगा. It will form potassium sulfate. As earlier it was hydrogen sulfate. With the sulfate SO4 there is hydrogen. But now potassium is more reactive than hydrogen, so it will displace it. वो उसको अपनी जगह से क्या कर देगा? डिस्प्लेस, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. सो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन द मेटल्स एंड द एसिड्स. नेक्स्ट, मैग्नीशियम. Magnesium is also comes above in the reactivity series than hydrogen. So magnesium is more reactive than hydrogen. So a more reactive element, a metal, displaces the less reactive element from its place. Magnesium ज्यादा reactive है बच्चों, हाइड्रोजन less reactive है. हाइड्रोजन नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर. तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा. It will form magnesium carbonate
along with the release of hydrogen gas. These are the reactions of metals with acids. But suppose we take copper reacting with hydrogen chloride, which is also known as hydrochloric acid. Suppose silver reacts with HCl. Hydrogen chloride or hydrochloric acid. Now, if you look carefully towards this reactivity series, copper, silver, gold, platinum are less reactive than hydrogen. Copper, mercury, silver, gold और platinum हाइड्रोजन से क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते. So in these cases, no reactions takes place. And from here a very important question will form that name the two elements which will react with acids and displace hydrogen. कौन करेगा पता? जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, like potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, nickel, tin, lead. These are more reactive than hydrogen. So they will displace the hydrogen from the acids. इनमें से कोई भी दो लिख दें. Whereas copper, mercury, silver, gold, platinum, they are less reactive than hydrogen, so they cannot be able to displace hydrogen from the acids. Next one, non-metals do not react with acids. Non-metals acids के साथ react नहीं करते. क्यों नहीं करते? Because non-metals are electronegative in nature. They gain electrons. एसिड से सिर्फ वही रिएक्ट कर पाएगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके. Electrons are the particles which are present inside the atoms that you will study in your other classes. So due to electronegative nature of non-metals, the acids do not react with them. So that is the reaction of acids with metals and non-metals. And on this basis also you can differentiate between them. Metal reacts with acid to form metallic salts with the release of hydrogen gas, whereas non-metals do not react with acids. Metals react करते हैं बच्चों acid से, and they will form metallic salts and hydrogen gas is produced, whereas non-metals do not react with acids.